So without any further delays, let me introduce to our today's guest, Kumaresh Das, Associate Director Sales at a non-IT company. He has more than 15 plus years of sales experience. His career journey is also very inspiring, starting as a customer care associate to a sales director. So welcome Kumaresh to our podcast and thank you for joining us today. I believe your insights today will definitely going to help a lot of aspiring BDMs and SDRS. Thank you, Thank- Kumaresh. Thanks, Tarun. Thanks. I hope I can add some value to it. I liked your concept. In fact, the name, I loved it. Um, Decode on sales. So yeah, and it's tech sales is something which is really promising. I mean, like, my this is what I've been doing from last 15 years. So glad to see, like, I mean, someone, took this initiative. We see a lot of podcasts these days, but then this one is something different. I mean, decoding tech sales. Yeah. Something fine. Yeah, lovely. Let's do it. Yeah, I'm very much excited for this. Thank you so much, Kumaresh. Actually, let me tell you that when we are discussing about the tax sales, actually the thing is that everyone is talking about the sales only. Like if you are talking about the any product sales, any SaaS sales, but when we are talking about the tax sales, like it is quite typical for the people like to make success in the taxes. The people like you who having a good experience and like a long journey as a sales in the tech industry specifically, then definitely I believe that your insights is definitely going to help our audience, right? So Kumaresh, over to you now. Before I ask you the first question, anything that you want to add about yourself in this year with us? All right. So, well, I started my career like, not as a sales guy. I started my career in call center. So it was a call center executive, and doing that today, doing into sales. I love doing what I'm doing. So basically, uh, this is what the secret sauce. I mean, usually people say that, what is the one thing that you really, really need to have in sales? I say your passion. If you're not love doing sales, you cannot do sales. It's as simple as that. I totally agree with you because sales is something where we are doing the repetitive task on the daily basis, the same task we have to follow with the different strategy, with a different mindset, I must say, but the same repetitive task. और जब हम कोई भी repetitive task continuously करते हैं तो हमारे लिए थोड़ा boring भी हो जाता है. It's a लेकिन very monotonous job, actually. It's a very monotonous job. But then the fun is, the uniqueness that you can bring in your daily life, and the creativity. So they say, like, sales is an art. A few sales is a science. It's actually a mix of art and science both. So definitely, yeah, yeah, yeah. So absolutely. Actually, it is more about the art than the science. People say normally that it is the science, but I also believe that it is more into the art. Like क्यों हम कहते हैं कि ये आर्ट है? इट इज नॉट कि आपको कितना बेसिक या कितनी स्ट्रैटेजीज आपको पता है सेल्स में जो सबसे मस्ट मेनली जो काम करता है वो ये होता है कि आप के उस पॉइंट ऑफ स्टेट पे आपका माइंड कैसे रिएक्ट कर रहा है आपके प्रोस्पेक्ट के साथ में, इवन इफ यू correct. आर ऑन द कॉल या फिर आप किसी मीटिंग में है या आप डिस्कवरी कॉल पे है, वो सारा का सारा आपने जितना भी होमवर्क किया होता है कई बार वो रखा रह जाता है. कन्वर्सेशन टोटली डिपेंड्स ऑन द प्रोस्पेक्ट आल्सो कि वो किस वे में कन्वर्सेशन स्टार्ट होती है और हम किस तरीके से उसको Correct. लीड करते हैं. लेकिन हाँ, एक चीज है जैसे लाइक द पीपल यू हु हैविंग द वेरी गुड एक्सपीरियंस हु ऑलवेज लीड द कॉल्स एज अ लीडर, लाइक वो कॉल को अपने हिसाब से मोल्ड करके ले जाते हैं कि कैसे मुझे अपनी कॉल पे बात करनी है, और जहां पे जो लोग इस चीज को बहुत ही अच्छे तरीके से करते हैं वही सेल्स को क्रैक कर पाते हैं, मेरा ये मानना है. Correct. Very true. So before Kamlesh, we go ahead with any questions, I'm would like to ask you, please share some light on your initial journey in a sales profile. Okay, so see, I mean, so usually this is the thing that also, whenever I meet any salesperson, I always ask them that, are you a, like, did you join sales as a career option? You chose it at the beginning, or is it like you're an accidental sales guy? So for me, I'm an accidental sales guy. I never knew that I will be, doing what I'm doing today. Oh, um, Started, like, so once I did my graduation, I started doing my call center job. I was loving it. It was very,
it's a fun thing, of course. Like, those days way back in 2008, 9, job doing work in call center was a little fun than versus what we are today. I mean, like, things got changed anyway. But then it was a night shift, working for the US market. Got very, it was the first time I got actually exposed to the US market. So पहली बार पता चला कि US में कैसे होता है, क्या होता है, how Americans do business, how Americans do work, like that. So उसके पहले तक तो सब कुछ हॉलीवुड मूवी में जो देखा था वही रियलिटी थी. So it was a different introduction altogether. Mhm. Then I joined IT company. That was again an accidental thing. Like, of course, I thank to my that time boss. He just hired me, like saying, so like those interview went on. After 15-20 minutes, he was like, "तू कर लेगा." And that's it. That was the day. Even I don't know what he saw in me that time, but then I joined in, and yeah, that is that. Today I'm here. So yeah, that has been the journey. My all these career, like, all the, more than a decade I am into this industry. Most I have been doing IT services selling, along with a couple of SaaS selling as well. But then my major share of experience comes from IT services selling, which I believe is a little crucial than product selling, SaaS selling. Obviously, Both yes. has different set of challenges, a different set of fun. But then usually people say that services बेचना थोड़ा tough है versus किसी specific product को बेचना, because product में at least like what you're selling, इतना है। whom you're selling, right? You know the right person. Yeah. You have something to show that, okay, this is what I'm selling. This is what this problem this product will solve. Yes. Service selling is that you're selling dreams. मैं नॉर्मली कहता हूँ अपनी टीम में जब भी हम लोग बात करते हैं कि अगर इफ यू आर सेलिंग द SaaS प्रोडक्ट यू नो योर ICP वेरी वेल Correct. the pain points, you know that what you are solving exactly. Then the third thing, like if your ICP is defined, then you can draft the messaging accordingly and very well, like you do the research very well. But Correct. when you don't know that what kind of the services can be required by the next guy, it is very hard to just like making the assumption, and where that the intent signals come in, and like the people who having the good experience, that they can sense that what is the intent, where I have to find out that intent, and Right. target that kind of the audience over the you can say over the internet or in the market, right? So Correct. Correct. by the way, the one interesting fact that we share both, like I also started my career as a customer care executive in the US process. It's really, I guess, well, ये मेरा पर्सनल थॉट है कि और मैं कई बार लोगों से कहता भी हूँ कि इफ यू वांट टू डू यूएस मार्केट, इफ यू वांट टू टैप यूएस मार्केट, इफ यू वांट टू वर्क इन द यूएस मार्केट एंड वांट टू डू समथिंग इन सेल्स, एटलीस्ट 6 महीने के लिए करो, बट कॉल सेंटर से स्टार्ट Call करो. center karo. Having a reason, you can understand the how they are thinking, like how करेक्ट. they are talking, and the main thing that you understand that what is exactly the time zones, what is exactly the way of their thinking, way of talking, what are their culture basically. So एग्जैक्टली. अगर एग्जैक्टली. आपको वो समझ में आता है, then you can go ahead with that. मेरे को अभी भी याद है मेरा फर्स्ट इंटरव्यू जो था US प्रोसेस के लिए, उसमें मेरे से एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था उन्होंने कि US में कितने टाइम जोन से बता दो। एंड एट दैट टाइम आई वाज ब्लैंक कि अरे मतलब वहां पे अलग अलग टाइम जोन्स होते हैं क्या, अपने इंडिया की तरह नहीं है। तो एक्चुअली दैट्स द थिंग दैट्स यू कम टू नो व्हेन यू वर्क विद द practically with the targeted regions. Very interesting thing you mentioned. Even till today, I have rejected, I don't know the count, but then I have rejected a lot of people just because of this thing, just one question. And so, like, someone came on the call, or someone, if it's an in-person interview, very, attractive guy, very, English is like marvelous, पूरा पता है, fluent English है, accent फाड़ है एकदम, it's too good, like too good to be true, like that. And then it's like, okay, in 4 years I'm working in the US market, I know each and everything. And I was like, simple question, कितने time zone है US में? And the person like, हाँ okay, and this, and I'm like, okay, rejected. Simple. So why? Because it is not that it is so. People can say like, okay, he will learn, which is fine. Of course, as a fresher, I cannot expect you to be known that, or to be knowing that. But then, if you're claiming that you have been to that market for 4 years and you don't know the time zone, how is it possible? yes, at least you have to know about the culture and the time zones, Exactly. So it's a or very the food basic. they are eating at least.
because Exactly, it's a very basic requirement. डेफिनेटली, और कई बार क्या होता है कि व्हेन वी आर ऑन द सेल्स कॉल ना, if the prospect, if the call is about to close and we are sensing that yeah, I can crack this deal, now the time is to build the personal relationship. And when you are starting to build the personal relationship with the prospect, then it comes in, like you have to discuss something else apart from the Correct. task, the thing that you are doing over there. You have to task something personally, like about him, or whatever in his company is doing exactly, or what kind of the culture they are following in their organization or in their country. Then it comes to be like very good thing if you have the knowledge about the country that you are targeting, the culture and the festivals, everything about their regions. Very, very true, very true. अगर हम बात करें कि अभी आपने एक चीज मेंशन किया व्हेन यू आर सेइंग अबाउट द इंटरव्यू, कि इंग्लिश चाहे कितनी भी अच्छी हो, और मैं इस चीज के ऊपर जाके रिजेक्ट कर देता हूँ बच्चों को, क्योंकि वो अगर रीजन नहीं समझते तो वो बात क्या करेंगे अपने क्लाइंट से, है ना। मैं यहाँ पे एक सिंपल सा क्वेश्चन जो सभी लोग पूछते होंगे आज की डेट में, और हम लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्पेशली एज वी इंडिया, कि अगर आपसे मैं पूछूं कि आप इंग्लिश लैंग्वेज को कितना वेटेज देते हो इन एन इंटरव्यू, कि एक सेल्स पीपल के लिए अगर आप हायर करो, एक सेल्स प्रोफाइल के लिए आप हायर करो, और लेट्स से आप यूएस के लिए, नॉर्थ अमेरिका प्रोफाइल के लिए ही हायरिंग कर रहे हो, एंड एट दैट टाइम आपने देखा कि उस बंदे के अंदर सेल्स स्किल्स तो बहुत अच्छी है, उसका उसका वे ऑफ टॉकिंग, और यू कैन से द यू आर सेंसिंग दैट ही हैविंग द सेल्स स्किल, बट द इंग्लिश इज समहाउ 60-70 ओनली। सो क्या करोगे आप? विल यू सेलेक्ट हिम, और व्हाट इज योर टेक ऑन टू इट? All right. See, in sales, there are three things. Basis on that, you can evaluate someone. Okay, and हम्म। particularly, I'm talking about. So here we are discussing about SDRs. The inside sales folks, यस, यस। lead generation guy, basically, I would say, right? हम्म। Because in sales, definitely we start our career from there. Eventually, we become account executive and all that. But then, as an when we start our career, we become the lead gen guy. Of course, I mean, company doesn't give us that liberty or that platform कि चलो day one को और चलो business close करना चालू करो. First they give us कि चलो lead generate करो. Then there is a senior guy who is handholding you, who is helping you to going on that call with you, doing हम्म। the further negotiation, or making it more nurturing part, that senior guy is doing. So when you're entering to that domain, sales domain, the first thing that you do is lead generation, right? I mean, inside sales work. There are three things which I personally feel that, or what I do, or I feel that should be, someone should evaluate any individual in three aspects. One is definitely comm skill. So I'm not talking about skill, English speaking skill. I'm talking about communication skill. How the person communicates, how he delivers his message to, the next person. Second is how your, how you present yourself, like how you look, how you dress, and all that thing. And the third thing is how good you are in English, right? Now, depending on your, or this is also for the stakeholders, like, if someone is hiring someone, so depending on at what role you are hiring that person, these three things can be evaluated or can be, looked upon. So, per se, I'm hiring someone for US market. I want that person to, you know, stay awake late night and generate leads for me, making calls, cold calls and all. So the how that person looks, or how that person dresses up, is irrelevant for me. So that thing is anyway, like, doesn't matter. The second thing is that how that person communicates, the comm skill, or the the convincing skill, or the understanding of the sales ecosystem, awareness of all these things, that comes, or that is the most important aspect of judging someone, or finalizing someone. The third thing that comes as a English speaking skill, yes or no, like how good that person speaks English. Now, if you ask me personally, individually, कि यार, does the English really matter a lot? Because we live in India, Hindi is our language. Why should I expect someone to be fluent in English? तो यार English तो यार parameter नहीं होना चाहिए. As an individual, I may say yes, but on the other side, we need to understand one thing,
that is the bare minimum need of that particular role. So if you are hiring someone for, say, like India market, so Hmm. for India market SDR, that particular role is may not be, that particular skill may not be that crucial, because if that person is okay in English, but then he can communicate well, he can do better. Like, because end of the day, no matter what, you're talking to someone in India, particularly in northern part of India, even he's the CX, so he may start the call, say, in English, but eventually comes to Hindi, Hmm. right? But that is not the case for the US. Yes. So, like it or not, English is must. It is a basic need. So I cannot let anyone go there considering that he's very good in comm skill, he's very good in communication, or he's very good in understanding whatever, like all the other aspects, but his English is bad. What would I do with that? Because ultimately he's my first That's it. face. He's my face to the it's the company's face for that client. So the very first moment when the person is speaking to the prospect, he decide. I mean, like in a flowery world, we say we should not be judgmental, but in reality, we are. as a Yeah. human, as a human, we are judgmental. We judge people. फोन आता है, फोन पिक करते हैं, द मोमेंट वहां से जो पिच आती है ना, शुरू की 5 सेकंड, 7 सेकंड, 8 सेकंड, 10 सेकंड में वी जज, वी डिसाइड कर लेते हैं कि ये हमारे काम का है नहीं है, इससे बात करनी है नहीं करनी है, एंड वी हंग अप देयर. So yes, to answer that particular question, should we consider English as a decisive factor whether we should hire or not? If it is for US or per se like UK sales or Europe sales, the answer is yes. It has to be. Okay. And that's very true. And this is how the feedback sometimes I got from my HR team, or maybe the candidate who actually I interview. So what happened? They say, "Ki, sir, I will learn English later, or I will improve my English." Okay, so first improve your English, then please come Then back. come back. The reason behind that, because the country or the region for whom we are taking the interviews, like you are going to talk to the US guys. So if you do not have the communication breeze between you and your prospect, or between you and that particular guy, you are not able to convey your message or whatever you want to Very true. Yes, yes, yes. clear. Absolutely. So in that case, yes, we can say, yeah, the English is also the decisive factor for us. If we are hiring for people who is going to work in the region where the English is the primary language, right? So like for the US, for the example. Correct, correct, correct. So we can say in the simple language, if we are hiring for the German, we can't hire you with the Hindi. We know that we need someone who can speak fluently in German, right? Yes, yes, yes. So my next question to you, like based on your experience, what advice would you give to someone just who is just starting out? What is your personal go-to strategy for prospecting a new market? And could you share any example that helped you to crack into it from your initial days? It is not. Okay. All right. So see, I mean, in sales, or particularly in, for again, the role we are talking about, lead gen role, inside sales role, there are two things that drives the whole factor. One, your sales skill, and second, your product knowledge of what you are selling, right? Usually people say that you need to be mastered in your product, what you are selling, because if you don't know what you are selling, how can you sell that? I agree somewhat, of course, I somewhat agree to that, and that's a very true statement. But at the same time, you are mastered in your product, but if you don't know how to sell, it is irrelevant again. Because if if that is the only parameter to that, you have to be very good, in your product, or you have to have good knowledge of your product, then I guess the product managers are the right person, because they know in and out of the product, right? Mhm. But ultimately they can't sell. This is why you are needed. So Yes. what makes you different is that your sales skill. It is very simple that if someone questions you something on about the product, you can simply say that, okay, I'm from the sales team, I don't know that. Possibly I can schedule a call with you, I can bring someone, a subject matter expert. This is where subject matter expert comes in picture, right? Like I can bring that guy, he can tell you about the product. My job is to do sales, so be good at what you are. You can't be, you can't do mastery in each and every product. Right. Also, on the other side of the thing, as an individual, I would say that if you want to grow in your career, right,
So in the first job, wherever you have joined, and you have spent say like 80% of your time learning their product, that product what you are selling, mastery in that, versus that you learned only 20% of sales skill. When you move out from that job, go to another new job, again you are spending your most of your time learning their product, their solutions, and you are carrying only 20% of your knowledge to the new job, which is your sales knowledge. So my suggestion here is that spend more time on learning your, bringing or sharpening your sales skill. Spend 70% time there. And of course, I mean, whatever you are selling, you should be knowing that. You should know your, because if you don't know your product, you don't know your ICP. You don't know who is your ideal customer, who you don't know who is the ideal prospect. How would you reach out to them? So of course that matters. But then your sales skill is something where you need to invest most of your time. Now coming to your question, that as a fresh, a college freshie who just come to a new job, doing this SDR role, what should what the first go to thing what he should do? First, I would say that spend some time to learn your product, Hmm. what that product does, what really problem that product is solving, or even the services. What really, now in IT services, what would you say? What we are solving? We are solving everything. We are doing digital transformation. We are doing everything. Now, if you say that, okay, what is the real problem we are solving to a company? So the answer could be vague. That could be like, we are solving a lot of things Yes, depending. and that's the main problem for the everyone. Like they don't know that what exactly. If someone even sometimes I see that on a call on with the SDR or with the BDM, if the client asks them, the prospect asks them that, okay, so like what exactly you can solve for me if it is the first call. So he can say, see, we are in the IT services, so we can we like everyone is transforming their company, their business digitally, so we can help you with lots of the things or with anything like that. So in that case, the answer is very vague. If you are not exactly solving a particular pain point, then that particular person is not going to show any. Nobody will listen to you. Exactly. Exactly. So here I would say that at least you should spend time on learning Mhm. which department does what intrigues which department, which individual, what intrigues. So basically, like even in IT company, I'll tell you, even in IT company, um, or talking about CXOs, so CEO, CTO, CMO, let's talk about these three designation. Possibly, CMO can be intrigued or can be triggered by something which is solving their department, right? Or something which, or the solution that I'm trying to build or trying to propose is solving something in the marketing and branding side, Mhm. versus the CTO is more concerned about the whole tech Like, ecosystem they have, and what add-on you are bringing to there, mhm. versus CEO, he is talking about whole soul business, मेरा पैसा कितना बच रहा है, right? That's right. Depending on, and again, Time कितना बच रहा है? even in the CEO side, if it is a marketing CEO or like a sales CEO, his thought process would be different versus a tech CEO. XCO, right? So it's as a salesperson, or if you're starting off your career, I would suggest that spend more time there to learn this persona reading. So in tech in sales term, we said it's persona reading. Like we should know which persona would be driven by what, Mhm. instead of learning कि जावा में हम क्या कर लेते हैं या फिर नोड पे हम क्या कर लेते हैं, पाइथन में क्या करते हैं. सो इट इज वेस्ट ऑफ योर टाइम, इट विल नॉट सॉल्व एनीथिंग. बट इंस्टेड इन्वेस्ट टाइम टू लर्न योर persona. So there are two things. One, ICP can be driven by कंपनी स्टेक होल्डर्स, लाइक द कंपनीज विजन एंड ऑल दैट, कि भाई मेरे को इस साल एआई बेचना है, सो आईसीपी क्या होना चाहिए. या मेरे को इस साल डेटा पे ज़्यादा फोकस करना है या क्लाउड पे ज़्यादा फोकस करना है, तो मेरा आईसीपी होना चाहिए. आईसीपी इज समथिंग विच इज अ वेरी वेग टर्म, कि भाई आईसीपी इज लाइक 4 या 5 पॉइंट में आईसीपी खत्म हो जाता है, कि इंडस्ट्री ये होनी चाहिए, एम्प्लॉय साइज ये होना चाहिए, मार्केट ये होना चाहिए, और टाइटल ये होनी चाहिए, आईसीपी इज डन. बट persona reading is something which gives you that edge on top of what others are doing, that how you can go to market ready and be more precise, versus speaking vague things कि हाँ से डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कर देंगे, वो तो पूरी दुनिया कर रही है, आप अलग क्या कर रहे हो. आप अलग क्या कर रहे हो? दूसरा चीज ये भी होता है को मॉरिस की, जब हम बात करते हैं कि लेट्स से अभी अभी आपने खुद ही एग्जांपल दिया कि इस साल का हमारा टारगेट है कि हम एआई बेचेंगे।
फॉर एन एग्जाम्पल। अब एआई में हम बेचेंगे, या हमने एक आईसीपी डिफाइन कर लिया कि ठीक है मैं इस टाइप की कंपनी। अब जब हम कहते हैं ना कि इस टाइप की कंपनी को हम बेचेंगे, तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है किस टाइप की कंपनी को। और वो करेक्ट। समझना एक बहुत बड़ा मतलब पॉइंट होता है, खास करके ये जो नए न्यू जनरेशन वाले एसडीआर और बीडीएम्स है, कि भैया वो कंपनी को डिफाइन करना तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले उस कंपनी को खोज के लेके आओ कि किसको एआई की अभी जरूरत है। तो अब जब वहां पे बात करते हैं, तो सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि हाँ ये कौन हो सकते हैं जिनको मेरे एआई सर्विसेज की जरूरत है अभी। तो ऐसे केसेस में जब आप प्रोस्पेक्ट्स को डिफाइन करते हो, जब आप अपनी आईसीपी बिल्ड करते हो, अगर मैं यही क्वेश्चन आपसे पूछूं, तो आप क्या 3 या 4 चीजों को मैटर करोगे इसमें, कि मैं ये इंटेंट देख लेता हूँ, इससे मुझे समझ में आ जाता है कि हाँ ये कंपनी जो है ये मेरे लिए परफेक्ट है, कि इसको हाँ मैं एआई अपनी सेल कर सकता हूँ। तो कुछ अगर आप उस पर अपना व्यू देना चाहो। श्योर। दो एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे। वन Hmm. इज एआई बिकॉज दैट इज ट्रेंडी, Trend. everyone is doing AI these days. Yeah, is the big elephant right now. And second is cloud. So Yeah. again, another trendy thing, right? Everyone is on cloud these days. So say like I'm talking about like say like I'm an SDR for a startup. छोटी कंपनी है, छोटी टीम है, 15 20 30 लोग हैं, एंड द Hmm. फाउंडर हैज हायर्ड मी एज अ फर्स्ट सेल्स गाय, Hmm. एंड द expectation is like business law, right? I mean that's a bare vague expectation from sales की business law। कहाँ से लाओ, क्या लाओ भाई, तुम जानो। चलो कैसे लोग पता नहीं, बस लेके। तुम जानो, तुम बनाओ अपना स्ट्रेटेजी, लेके आओ, right? This is and this is how I guess 80% of the IT companies are running on this model। हम्म। As a salesperson, you need to sit and think, सो इसको मैं ऐसा बोलता हूँ कि कई लोग जैसे कहते हैं ना कि री इंजीनियरिंग और रिवर्स इंजीनियरिंग कहते हैं इसको, कि स्टार्ट थिंकिंग ऑन अपोजिट, लाइक बैक वापस जाओ, रिवर्स पे जाओ कि यार एआई है तो अब एआई बिकेगा, तो एआई की नीड किसको है, तो सबसे सिंपल आंसर सबको है, हम्म। एआई की नीड सबको है। या फिर क्लाउड है तो क्लाउड की नीड तो सबको है। अब हम्म। सबको तो है, अब सबको तो हम सर्व नहीं कर सकते, तो हम किसको सर्व कर सकते हैं, तो उसमें सबसे पहला ये आता है कि अगर आपका पास रिकॉर्ड पर जाते हो, आप चेक करते हो कि हमने किस टाइप का काम किया हुआ है। आप हम्म। यू सिट विद योर स्टेक होल्डर्स, यू आस्क कि सर ठीक है मैं कर लूंगा, आप मुझे ये बताओ कि आपने क्या काम किया हुआ है, हम्म। कंपनी ने पहले काम क्या किया हुआ है, किस हम्म। इंडस्ट्री पे ज्यादा फोकस है। हम्म। बिकॉज इवन इफ आई एम गोइंग टू समवन एंड आई एम टेलिंग दैट पर्सन कि यार हम ये कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, या ये पैसा कर लेते हैं, ऑल दैट, द फर्स्ट क्वेश्चन दैट पर्सन विल आस्क कि किया क्या है इसमें, हम्म। right? And that's a very genuine question because as a stakeholder, if I'm thinking, so for an example, I will tell you very very simple example that मेरे को एक CRM implement करवाना है, very simple thing, CRM implement करवाना है, I have multiple options, Zoho है, HubSpot है, Lead Squared है, and blah blah what not, right? Salesforce and all that। सबसे पहले तो मेरे को ओईएम चूज करना है कि भाई मुझे कौन सा प्रोडक्ट यूज करना है, राइट? इफ आई एम अ टेक गाय, सो आई विल स्पेंड मोर टाइम इन, आई नो लाइक विच वन इज वर्किंग फॉर मी और विच वन नॉट। सो Right. पहले तो मैं वो चूज करूंगा, देन आई गो फॉर देयर पार्टनर्स। सो सही लाइक फॉर एन एग्जांपल मैंने सेल्स फोर्स फाइनल कर लिया कि सेल्स फोर्स चलेगा मेरे को, मेरे प्रोडक्ट को मेरा प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। देन आई गो टू मल्टीपल सेल्स फोर्स पार्टनर्स एंड देन आई आस्क देम कि भाई तू मेरा प्रोडक्ट बना के देगा, सेल्स फोर्स में इंप्लीमेंटेशन करना है एंड ऑल दैट। Now, the first thing I'll do while evaluating all these things कि पहला तो कि भाई Salesforce which CRM is relevant for my industry, whatever industry I am on, like as a stakeholder, right? कि मेरी मेरी इंडस्ट्री को कौन सा CRM सूट करता है। If I'm into B2B, possibly Salesforce will से हम भी सूट करते हैं, Zoho will से हम भी सूट करते हैं, और maybe like HubSpot will से हम भी सूट करते हैं। Then whatever the permutation combination I did, I finalized one, and then I started choosing partners. My first question on the partner कि भाई तुमने इस इंडस्ट्री के लिए इस CRM को पहले बनाया है, yes or no? और द मोमेंट ही सेज यस, आई विल शॉर्टलिस्ट दैट। द मोमेंट ही सेज नो, मेरी फटेगी, राइट? करूं ना करूं, है ना? इट्स नेक्स्ट लेवल थिंग, बट मैं सोचूंगा। Similarly goes from our side, like when we are reaching out to someone and we say like हम एआई में कर देंगे, he was like wow wonderful, आप एआई में करते हो, बताओ चलो आपने क्या किया, पहले बताओ आपने हमारे इंडस्ट्री के लिए काम किया नहीं किया, राइट? सो industry relevance is the most first level of personalization that helps in defining ICP, defining persona. Industry level personalization, that is the most crucial part, and is my personal suggestion to stakeholders as well, like the business owners who are running IT companies. Instead of going here and there, let's stick to one, solve problem of one industry, and then take the next one as a next step। डोंट डू इट। यूजुअली क्या होता है, कई लोग ऐसे भी आते हैं जैसे कि हम ये टेक बेचते हैं, हम जावा के डेवलपर्स बेचते हैं, फिर मुझे इससे मतलब नहीं है कि वो फिनटेक में जा रहा है कि हेल्थ टेक में जा रहा है, कहीं भी चला जाए जावा का डेवलपर बेचना है। दिस इज अ गुड मॉडल टू सस्टेन, दिस इज अ गुड मॉडल टू लिव योर लाइफ,
but this will not help you to scale. If you want to scale, you have to be focused कि मैं इस इंडस्ट्री का ये प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ, because that makes your life easier, that makes your salesperson life easier to go and you know push कि हम हमें ये आता है. So एज अ सेल्स पर्सन आई वुड डेफिनेटली फर्स्ट आई गो एंड टॉक टू माई स्टेक होल्डर, सर आपने कितना काम किया पहले आप मुझे ये बताओ, राइट. सो ही सेज लाइक चलो हमने ना हमारे 4 क्लाइंट ऐसे ऐसे हैं, एक हेल्थ केयर का है, एक फिनटेक का है, एक वगैरह वगैरह. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन, सो से लाइक एक और मैं लेके आता हूँ, विच वन यू आर कॉन्फिडेंट, मैंने ऐसे यू आर आई मीन योर टेक टीम इज कॉन्फिडेंट कि ये तो हम कर लेंगे जी, इसको तो पूरा आता है. हम्म, तो यू से कि ओके चलो फिनटेक का हमें पूरा आता है, फिनटेक हम कर लेंगे. सो दैट इज द फर्स्ट लेवल ऑफ फिल्ट्रेशन यू हैव डन कि भाई मेरे को फिनटेक को पिच करना है, राइट. देन नेक्स्ट थिंग इज कि फिनटेक में नाउ आई डू दिस रिवर्स इंजीनियरिंग कि फिनटेक में एआई कहाँ कहाँ फिट हो सकता है. I'll हम्म, do some chat GPT and all that. I'll do some AI. I'll read about it, do some case study, read about it in the free time. I'll do that. I'll get a ballpark idea कि यार AI का ना यहाँ यहाँ पे कॉम्बिनेशन सेट होता है. बिकॉज दीज डेज द प्रॉब्लम इज when you go and talk to stakeholder, some AI करते हैं, the stakeholder will say or the business owner will say yes, come talk to me, because that's a buzzword everyone wants to hear out, everyone wants to hear that what you are selling, what you are building, and then you go on the first call you ask, आप बताओ क्या करना है, क्या बनाना है. It's like मुझे क्या पता क्या बनाना है, मेरे को नहीं पता, तू बता क्या बना के देगा. सो व्हाट हम्म, यू नो अबाउट दैट इंडस्ट्री यू कम एंड टेल मी, राइट. अगर मेरे को सिंपल वेबसाइट बनाना है तो मेरे पास ऑलरेडी है, मेरे को तेरे तू नहीं चाहिए, राइट. सो that reverse engineering is very important, that you first think which industry you can solve, which industry use case you can solve, then you see your expertise aligned to that industry, then you see other aspects like geography, किस geography में कर सकते हैं, employee size, revenue size वगैरह वगैरह, वो तो फिर next level की filtration है. बट द बेसिक नीड है वो ये है कि एज अ बिजनेस ओनर यू नीड टू डिसाइड कि मुझे किस इंडस्ट्री को टैप करना है. और एज अ सेल्स पर्सन आई कैन गो एंड टेल माई बिजनेस ओनर कि हम इस इंडस्ट्री को टैप करेंगे, इस एम्प्लॉय साइज को टैप करेंगे, और लाइक ये पिच करेंगे, दिस इज गोइंग टू बी अवर पिच. पॉसिबली एआई, पॉसिबली अगेन फॉर क्लाउड की, अगर मैं क्लाउड बेच रहा हूँ और मेरे को यही नहीं पता कि और मैं ऐसे बिजनेस को बेच रहा हूँ जिसका क्लाउड पे है ही नहीं कुछ. There are a lot of small retail shops as well, and they don't have any plan to go and sell online. They don't want to do anything on e-commerce. उनका क्लाउड यूजेस ही नहीं है, क्या करोगे आप क्लाउड का वहां पे, क्या ही करोगे उसको पिच करके. सो रिवर्स इंजीनियरिंग इज वेरी हेल्पफुल हियर. इफ यू आर गोइंग कंप्लीटली ब्लैंक वेयर योर स्टेक होल्डर और योर बिजनेस ओनर और योर बॉस इज सेइंग कि भाई धंधा लेके आ, हम्म, नहीं पता क्या करेगा, धंधा लेके आ, देयर यू गो एंड जहां पे शुरू ही आपको करना है, आपको नहीं पता, कोई नो वन इज गाइडिंग यू, देयर डेफिनेटली यू कैन सिट एंड डू द रिवर्स इंजीनियरिंग कि भाई मैं किस टेक्नोलॉजी को बेचूंगा, वो टेक्नोलॉजी कहाँ कहाँ फिट होती है, वो हम्म, जहां जहां फिट होती है उसमें से कौन सी इंडस्ट्री हम कर सकते हैं, उस इंडस्ट्री के अंदर हम क्या कर सकते हैं, एंड right. बेसिस ऑन दैट देन यू डू द रेस्ट ऑफ द मैथ. Very good point. Loved it. The reason behind that, I have seen a lots of the salespeople, even I am talking about the marketing team who are doing the even the performance marketing. They sit and they start with the deciding the ICP, like what could be the team size of the company, what could be the revenue, or like if they have getting any seed funding or something like that, they are checking on these parameters. Okay, ठीक है, आपको वो पैरामीटर देखना है, लेकिन अगर आपको ये पता ही नहीं है whether your service or your product is going to fit with that particular company, it is not making any sense to define this kind of the things in your ICP. So basically, what I also believe that when you are building your ICP, you have to first of all figure it out that even that company or that like your ideal customer profile is looking for the services that you are trying to sell or not. Like for an example, जैसा अभी आपने भी मेंशन किया एआई के बारे में, अगर हम एआई पे रिवर्स इंजीनियरिंग करते हैं, कि मैं बात करता हूँ ई कॉमर्स इंडस्ट्री की. अब नाउ इफ यू आर गोइंग टू टॉक टू ई कॉमर्स इंडस्ट्री एज अ आईटी कंपनी, मेरे पास तो डेवलपर है, मैं ई कॉमर्स वेबसाइट भी बना देता हूँ, मैं उनका बैकएंड पैनल भी बना देता हूँ, मैं कुछ उनके रिलेटेड टूल्स, मार्केटिंग टूल्स वगैरह भी डेवलप करता हूँ. बट द थिंग व्हेन यू आर saying particularly that I am going to sell the IT, you have to think about it where the AI is going to help them in their industry. So then come the idea that कि अरे यार इनको ना they are in the e-commerce, so we can sell them the AI sales assistant that is going to set on their website
as a chatbot, which is going to help them as a agentic AI, whether they are going to give them the responses to their customer and improve the customer experience, saving the time for their customer side team. So Correct. जब आप उनको बेनिफिट्स दिखाओगे कि यार आप ये बनवा लो, एंड देन यू आर ऑल्सो सेइंग कि हम आपको कस्टम बना के देंगे, इट इज ऑल्सो गोइंग टू save your data, that is going to save and secure, and you are not going to share your data with some third party company, it is also on your server, on your cloud only, then they are definitely going to talk to you. Until and unless, again, the thing makes the difference when they have the other priorities, it's also depend on that. Absolutely, absolutely. Actually, I loved your point, whatever you have shared here, कि रिवर्स इंजीनियरिंग तो सही में काम करेगा इस केस में, अगर इफ यू आर very new and you do not have any senior who is going to guide you, who is going to help you with your ICP, with your ready persona, then definitely it is going to help the people. Let's talk about the signals. Okay, tools and signals. When we say, when you are trying to identify the right prospect, what key indicators or the buying signals do you usually look for as a senior? Okay. So see, there are two things, signals or intents, I would say. Signals or intents are basically used or to be used or should be used for personalization, for triggering. So see, the whole thing is that, and before coming to signals, I'll tell you one thing, like in sales life, in salesperson, as a lead gen guy, what we can do. So if someone, and let's demystifying it, like, so say like as a salesperson, and when I say salesperson, I mean like inside sales guy, lead generation guy. As a inside sales guy, हम क्या कर सकते हैं, हम क्या करते हैं? So we do three things: call, email, LinkedIn. That's it, right? चौथा कोई काम है ही नहीं करने को. कभी इमेजिन करके देखो प्रैक्टिकली, there is no fourth thing you can do. Even if you want, you cannot do. Right? There are only three things: call, email, LinkedIn. Now imagine, and very hypothetically imagine this, that you are sitting in Noida or Delhi NCR or in Bangalore, somewhere in India, and you are reaching out to a prospect who is sitting in the US. You are not the only guy who is doing that. Your first competitor is the guy who is sitting in the US selling in the US, right? There are companies who are doing the same thing, but sitting in the US and selling to the US people. Then there are companies who are in close proximity, or who are our competitor markets, say like Ukraine, Cambodia, Colombia, Cambodia. Like there are a lot of companies, right? I mean, Ukraine is the one of the top prominent markets. Philippines is there. Then South Bangladesh. America, Brazil and all. Then Mexico and all. Then we, India. China is, of course, China is anyway, like it's a different ball, it's a different game. Is that they're a manufacturing one, of course, not the IT services one. But then yeah, there are a lot of other countries who are already there, doing the same stuff. And then you in India, there are like major IT hubs. Bombay is there, Bangalore is there, Chennai, Delhi NCR and all that. There are tens of thousands of companies here also doing the same thing. So if you see the broader picture, everyone is doing the same thing: call, email, LinkedIn, and to the same market, to the same people, right? Right. Now the question is why someone would hear me out. Yeah. That's it. If you can crack that, that's the whole thing. You can, I mean, that is the main thing that you need to crack basically. अब आपको करना यही काम है, कॉल, ईमेल, लिंक्डइन, कॉल, ईमेल, लिंक्डइन. अब कब तक आप बेच लोगे अपने सर्विस? कब तक आप ये बोलोगे कि वी डू आईटी सर्विसेज, वी डू दिस, वी डू दैट, वी डू डिफरेंट, हम ये करते हैं, हम इस इंडस्ट्री में करते हैं, हमने ये कर रखा? कब तक बोलते रहोगे? दिस इज वेयर सिग्नल एंड इंटेंट हेल्प्स यू. So basically, signal basically helps you in getting some kind of notification which tells you that okay, this company is doing or planning to do something in this direction, possibly doing some investment, got some funding, a person got promoted, person changed the job, like that, right? So this is where you can do some sort of personalization. But the problem with that is, and I'll drag it a little bit, so possibly it will make some sense. अगर मैं किसी सेल्स वाले को आज के टाइम में बोलता हूँ कि भाई तेरे को मैंने टूल खरीद के दे दिया which will give you signal, maybe like LinkedIn Sales Navigator, maybe like Zoom Info, maybe Apollo or whatnot. Like there are tons of tools available right now who are giving you signals. तो say like for an example, Zoom Info ने आपको बता दिया कि भाई this company got secured funding of 4 million, right? Then सेल्स वाले के पास information आ गया. Now the first thing the salesperson will do, and doing these days, or most of the sales people do, they will write a sweet email, congratulations on your first funding, and then start writing the rest of the bit. We do this, we do that. My point is,
And think as a human. I'm not saying to, you need to, no need to be different guy. Just think as a human कि Hmm. भाई अगर जूम इन्फो आपको ये इन्फॉर्मेशन दे सकता है कि इसको फंडिंग मिली है, तो आज के टाइम में विद द हेल्प ऑफ एआई वो एक ईमेल भी क्रिएट करके तो शेयर कर सकता है ना, Hmm. राइट? सो उससे भी बेटर कि वो सबको दे रहा है ना ये इन्फॉर्मेशन, आप और ये वो भी। इन्फॉर्मेशन सबके पास है। हाँ। अब थिंक ऑन दैट अदर पर्सन हु इज हम्म, द स्टेक होल्डर, द सीटीओ, ही गॉट एन ईमेल, yes, someone Shyam from Bangalore of some IT company has reached out to me saying, congratulations, you got 4 million funding, and then we do AI, and let's talk. So, oh yeah, I should give business to this guy because he congratulated me. हम्म, Should he be worried about it, or should he be, really get excited about it? So हम्म, getting information is something different, using it something different skill. So you need to think on that direction, that how this information is helpful and हम्म, how you can utilize that information. So of course, yes, intent signals, those are very crucial information, हम्म, that is this age of digital age. You can utilize that information to nurture your pipeline, to हम्म, reach out to your prospects, making sure that you look different than what others are doing, because you are into that crowded line and you need to look differently. So you need to use that information, but not that you are just going plain congratulatory emails, or हम्म, some sort of saying that, okay, I just saw that you changed your job, many congratulations for that. Oh, he's not waiting for your congratulations, right? So you exactly, need to exactly. use that information in some sort of some smart sense. And जैसे आज आजकल एक बहुत कॉमन ट्रेंड, इफ यू सी तरुण, दैट people are saying like AI job खा जाएगा, AI job खा जाएगा, right? I mean, it's a horrible world we're living right now, right? And my point is simple, और this is what I convey to my sales folks as well, कि भाइयों देखो, सिंपल सी बात है, कॉल, ईमेल, लिंक्डइन, 3 काम है आपके पास करने को। आज के टाइम पे इतने सारे टूल आ गए, इतने सारे ऑटोमेशन टूल आ चुके हैं जो कि ईमेल खुद से चला देते हैं, सीक्वेंसिंग कर देते हैं। कितने सारे टूल आ गए जो आजकल लिंक्डइन पे भी सीक्वेंसिंग कर रहे हैं, राइट? एंड हम्म, रही बात कॉलिंग की, तो कॉलिंग के लिए भी एआई के टूल्स आ चुके हैं, राइट? वाई आर यू नीडेड? हम्म, आपकी जरूरत कहाँ पर है? हम्म, How you will add value. So you are not adding value by your typing speed. You are not adding value by your email writing skill. That okay, you are writing hey John or hi John or John hi. वो 3 बार hi को आगे पीछे करने से, this is not you are hired for, that my AI can do. What you are hired for is your brain. हम्म, What still AI cannot do. And this is where I guess, as a salesperson, people can still take that edge, that AI is not yet there. I don't know what future brings, but then as of now, AI is not there yet where you can use your brain to utilize that information. So for an example, to just to simplify this, आप किसी भी AI टूल पे ना, ये जो इन्फॉर्मेशन है, दिस सिग्नल्स एंड इंटेंट, यू पुट इट देयर, you put that person detail, LinkedIn profile, AI tool can create a very sweet, customized email for you हम्म, basis on the information you provided. But as of now, what is happening? AI follows a certain structure हम्म, and he gives you that information in that certain टेक्स्ट फॉर्मेट। सो आपने कई बार देखा होगा आज के टाइम में जो लोग बहुत स्मार्टली एआई को यूज नहीं करते, द मोमेंट यू रीड दैट ईमेल और द मोमेंट यू रीड दैट लिंक्डइन पोस्ट और एनीवेयर पोस्ट, यू कैन सिंपली से, अगर ये तो चैट जीपीटी का है, हम्म, हम्म, people say that, right? The chat gpt का है, right? This is where you are needed, this is where I need you, your brain. Use command, tweak that information, use that information, that how you can reach out to that person, how you can look differently, how that person should be convinced enough कि यार इसने कुछ अलग किया है, राइट? आई मीन दिस पर्सन, इसके पास भी वही इन्फॉर्मेशन था, 4 बिलियन का को हमें फंडिंग मिली है, बट ही डिड नॉट कॉन्ग्रेचुलेट मी, ही यूज दैट इन्फॉर्मेशन इन समथिंग डिफरेंट वे विच इज रेलेवेंट टू मी. सो सिग्नल्स आर इंपॉर्टेंट, इंटेंट आर इंपॉर्टेंट, बट what most important is that those signals and intent are not exclusively available for you. Those are again public information. It is just that हो सकता है 100 में से 40 कंपनी उसको यूटिलाइज कर रही हो, और हो सकता है 40 में से 20 कंपनी उसको आगे यूज कर रही होगी, हम्म, but still you are in competition of those 20. So what plays a smart here, that how you are using that information to your go to market strategy, how you're reaching out to your prospect, and that defines everything. So yes, it is important, but हम्म। it is not solely thing. Still you Okay. need to put your brain there. यहाँ पे there is a very generic question that comes like from the SDR and the BDMs, and most of the BDM and SDRs are absolutely field over here to define this. Like when they are starting and drafting their email or the messaging, they are even using the intent properly. Like
let's say they are congratulating at this moment, for this example. So even still after that, when they are ending or closing their message and they are not able to define their services properly, like what exactly they are going to help with, to the prospect. So I just want to ask you, like आपने बहुत ही अच्छा एक्सप्लेन किया कि हम कैसे उसको डिफाइन कर सकते हैं, हाउ टू ड्राफ्ट आवर मैसेजेस अकॉर्डिंगली। बट जब लास्ट में बात आती है कि हम जब उसको क्लोज करते हैं, अपने मैसेज को जब हम क्लोज करते हैं, तो वहां पे एक सबसे एंड में जब आप अपने प्रोस्पेक्ट को ये बता रहे होते हैं कि मैं आपके लिए कैसे हेल्पफुल हूँ, तो वहां पे बात आती है कि अगर मैं सिंपली एक लाइन मेंशन कर दूं कि हे आई एम अगेन दिस, वी आर एन आईटी कंपनी एंड वी आर गोइंग टू प्रोवाइड और वी आर गोइंग टू बिल्ड अ मोबाइल एप्लीकेशन फॉर यू, फॉर व्हाट, लाइक अगेन द प्रोस्पेक्टिंग, अरे मुझे तो मोबाइल एप्लीकेशन की जरूरत ही नहीं है भाई। करेक्ट। करेक्ट। सो अगर ऐसे में अगर हमें अब, क्योंकि और ये भी बात आती है कि एज अ बीडीएम और एज अ सेल्स पर्सन, मेरे को ये आइडिया पहले से तो है नहीं कि भैया उसको क्या जरूरत होगी, क्योंकि मेरे को तो इंटेंट सिर्फ इतना बता रहा है कि इसको इस चीजें हुई हैं, उसके बेसिस पे मैं एक एजम्पशन लगा सकता हूँ कि मे बी ही इज लुकिंग आउट ऑफ एनी सॉर्ट ऑफ सर्विसेज, बट स्टिल आई एम नॉट डिफाइंड बाई कि उसको चाहिए क्या एग्जैक्टली, मे बी इट कैन बी अ कस्टम एप्लीकेशन और इट कैन बी अ मोबाइल एप्लीकेशन और एनीथिंग एल्स लाइक दैट, और क्लाउड सर्विसेज, लेट्स से। तो इस चीज को जब हम क्लोज करते हैं मैसेज को, क्या आप अपनी तरफ से कोई सजेशन ऐड करना चाहोगे कि एक कोई ऐसी क्लोजिंग लाइन जो इस चीज से हमें बचा भी ले कि हम वैक्यू डिफाइन ना करें अपने आप को, और उसको रिलेट भी कर पाए एक प्रोस्पेक्ट की, अरे यार ठीक है, लाइक ही इज टॉकिंग अबाउट द हिज सर्विसेज, लेट्स टॉक इफ आई हैव सम सॉर्ट ऑफ रिक्वायरमेंट। Right. See, you answered yourself actually. I'll tell you how. So at the end of this statement, you mentioned that let's talk and figure out, right? This is why I say, first of all, be it LinkedIn, email, or call, your CTA should be a meeting, request for meeting. It should never be we can solve this or that, because you can never solve that because you don't know. आपको तो ये पता है कि उसको फंडिंग मिला है, बट उस फंडिंग का उसका पर्पस क्या है यू डोंट नो। यू आर जस्ट डूइंग योर वाइल्ड गेसेस, यू आर जस्ट अजम्पशन, यू आर डूइंग अज्यूमिंग थिंग्स कि यार अब इसको पैसा मिला है तो अब ये टीम एक्सपैंड करेगा तो ये प्रोडक्ट बनाएगा तो वहां पे हम हमारी जरूरत है, बट यू दिस इज योर अजम्पशन, यू डोंट नो व्हाट इज हिज प्लान्स, Yeah, राइट? right. सो the whole idea is, and this is the most common mistake people do, is that they bluntly reach out and say सर हमारे पास इतने डेवलपर्स है, इतना ये है, ये रेट है, ये है, वैसा है, एंड आपको चाहिए हो तो बता देना, which is a right approach up to an extent where you are sure that this person is looking for this particular thing. Or something. Instead of wasting time of each others, I know there are a lot of companies in Noida itself where they send email with the rate card at the very first email कि सर ये हमारा रेट कार्ड है, ये हमारे बंदे हैं, ये हम करते हैं, ये टेक्नोलॉजी बंदे हमारे पास है, आ जाओ हमसे बंदे ले लो, बात खत्म। इट्स वेरी सिंपल एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट। इट्स अ राइट बिजनेस अप्रोच वेयर यू नो that that guy has a need of this person. Or But you are selling C2C, like exactly, the staff augmentation, you can correct. say. In the staff aug, it works well. Yes. But what if we are selling about services? So in services, first and foremost, you need to understand that person, thought what he was looking for, whether he is actually open for offshore or not, whether, I am the right one he'll choose or not. So it is more like a communication building. First, you need to communicate. We need to talk. And how we can talk? We cannot talk on emails. We cannot talk on the very first call. So as a sales, the ISR or SDR, the first thing that you need to fix is that moment you talk to someone, try to convince him, and because you don't have that window either, आपको नहीं मिलता, आपको 15-20 सेकंड का विंडो मिलता है, 15-20 सेकंड में आप क्या क्या बता दोगे उसको? सो इट इज सिंपल दैट सी आई नो यू गॉट द फंडिंग, so I'm sure you have plans now, right? Whatever plans you have, I don't know yet, of course. My whole idea is to get on a call with you, to tell you more about us, to learn about your business, what you are doing, and then possibly we can find ways, we can determine things where we can work together. That's it. अब वर्क टुगेदर में क्या काम कर रहे होंगे, ओनली टाइम विल टेल, राइट? पॉसिबली हो सकता है कि आप आओ आके बताओ कि मुझे ये चीज चाहिए, हो सकता है हमारे पास वो कैपेबिलिटी नहीं हो। So instead of doing your wild guesses, be humble, be generic, be real. See, I know this and I am acknowledging this that you have got the funding or whatever it is. But then my idea is not to sell you. My whole idea is to get on a call with you, to tell you about us,
understand your business, tell you how we are helping such kind of companies in your domain, and then take it from there. इसका जो नेगेटिव एस्पेक्ट है वो ये है कि मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल रिस्पॉन्ड कि अभी हमें नीड ही नहीं है ना, आई नो, ऑफ कोर्स आई नो, ऑफशोर आई नो, आप लोग जैसी कंपनीज, तो हमें नीड ही नहीं है, तो अभी हम बात करके फायदा ही क्या है, हम्म, राइट? मोस्ट ऑफ द टाइम सेल्स पीपल गेट डिवास्टेटेड हियर कि यार गया मेरा यार, अब तो लीड नहीं आई, है ना? ट्रस्ट मी, दिस इज द मोस्ट, this is the best answer. If someone is saying there is no need right now, reach out to me later, you cannot be expecting everyone to be, ready with projects and coming to you, and you just go there and he hand over this project to you. As a sales is a journey, it's not a one time task, it's a journey, it's a wheel that keeps going on and on and on and on. You need to create your pipeline for that, and हम्म, this is your pipeline. Pipeline cannot be all the time that, okay, I'm busy right now, talk to me later, and that is the only thing I'm calling it as pipeline. This is also pipeline where someone is saying, I don't need right now, reach out to me later. And trust me, people always overstep here. They push, नहीं नहीं सर कोई बात नहीं, आ जाओ कॉल पे, आ जाओ, फिर बताएंगे, है ना? I understand the frustration because it is very easy to give gyan on real things are different. But I'm telling you on my experience that respect their privacy, respect their decision. If someone is saying no, respectfully say okay, but get his permission that we will stay connected. इसके लिए कोई मना नहीं करता इंडस्ट्री में कि हम्म, इट्स फाइन. अगर आप पुश करोगे तो वो मना करेगा, नेवर रीच आउट टू मी अगेन, डोंट डू इट. बट इफ यू आर सेइंग दैट ओके, I know, I understand. Is it fine? I just drop you an email. We stay in touch over email and we'll see how future brings together. Like, that's all fine. definitely. 3 months, reach out to that guy and say, like, hey, remember we had a word that time and you mentioned that you were busy. How's the idea we just talked right now? And maybe you get a meeting that time. You don't know. But it's very important to build that pipeline. You can't be expecting कि आज मुझे 100 लीड मिली और 100 की 100 मेरी आज ही सबकी मीटिंग हो जाए. या कई लोग, कुछ सेल्स वाले ऐसे बोलते हैं, यार क्या भसड़ पाल रखी है, एक बार में हाँ ना बोलो ना, ना तो ना है, हाँ तो है. ऐसा नहीं होता, ना भी हाँ है, बट यू जस्ट नीड टू वेट, यू नीड टू हैव पेशेंस देयर. This is the absolutely line that I always follow कि जो no बोलते हैं, who the prospects are giving you the no, that is the best reply actually. Definitely the reason behind it, when you're getting the reply no, at least he listened to you. So करेक्ट. now this is the time to nurture him. Okay, so absolutely your idea is very like good in that case, like where we are saying in the next step that okay, yeah, definitely this is the not the right time for you. Maybe we are not the right fit right now, but let's stay connected. Maybe in the future we will connect back again. And if you have anything to us, please let us know. I'll drop me the email on the same one. ओके, ऐसे कुछ भी करके हम एक अच्छा सा रिप्लाई बना के उनको दे सकते हैं. और इसमें मैंने देखा है, आई सी कि when they need in future, even if they switch the company, if they in the new company, and that in that company they are looking for this kind of the services, they come back to us. Oh Tarun, you remember me? We had a discussion over the email, so are you still in that company or you are still in that industry? So let's come back, on a call, and I have something for you, something like that. And I have got a meetings like that in my past. Absolutely, absolutely, it works. Absolutely, it works. I mean, the problem is that, sales requires a lot of patience. Lots of patience, yes. We run out of patience very Lots soon. of patience, and also you have to understand that you are not doing the marketing. Like lots of people say, connect the sales and marketing both together. You are not doing in the It marketing. In is the anyway marketing, different, you yeah. can be frustrated कि मेरे मार्केटिंग से रिजल्ट नहीं आ रहा यार. ठीक है, लेकिन सेल्स में आप ऐसा नहीं कह सकते. नाउ व्हेन यू आर टॉकिंग टू द पर्सन, नाउ इट्स द, we count it as a MQL. After the MQL, you are talking to the person. So Correct. that's already past the marketing. Now it's time to nurture him and convert it into the sales basically. So now that's the part where we plays the role. And the thing is ki you, like you have to build the relation first. Once you build the relation, किसी से भी अगर if you do not know any person in at the very first meeting, you first going to introduce yourself and just say that oh, it's nice to meet you, that's all, nothing else, because अभी हमने कुछ जाना ही नहीं है उसके बारे में. Correct.
यहाँ पे कन्वर्सेशन खत्म हो जाती है। फिर जब हम नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, ओ या आई हैव सीन यू इन दैट सेमिनार, ओके सो लेट्स, ओके हाउ इज द लाइफ गोइंग ऑन, एंड देन यू कैन स्टार्ट विद द डिस्कशन, मे बी द प्रोफेशनल डिस्कशन और समथिंग लाइक दैट, and then you come back to your services. Even on the LinkedIn you can follow this, it's work for you. Very true. Very true. Yes. Yes. Absolutely. So, Kumar, the discussion is going very good now, and like your insights are very nice and the very practical, I must say. So, my next thing is about the LinkedIn. We all know that most of the, I can say 99% of the BDMs, SDR, salesperson, everyone is on the LinkedIn. They are just trying to get on the LinkedIn. LinkedIn is the only one platform. Even if we are talking about the other platforms like the Apollo and Zoom Info or any another, we all know as a senior BDMs that like in those tools are actually scraping the data from there only. The thing is that how they are presenting the data, maybe they are also figuring out the data from the other sources as well, where they are finding the, like from the ant tracker or the other like you can say the platform, they are finding the data, like if they get the funding or if they the senior position is change the profile or something like that. But of course the all are connected from the LinkedIn, I must say कि सबका सबका आइडिया तो वहीं से है। Correct. और अगर हम अपनी बात करते हैं तो वी ऑल लाइक nurturing or we are prospecting on the LinkedIn most of the time. Even we can say 60% of our time is spending on the LinkedIn only, most of the cases. So अगर हम बात करें LinkedIn के बारे में, so LinkedIn has become a core channel of outbound these days. When your team is prospecting on LinkedIn, what do you usually advise them in terms of crafting a connection request? And once the prospect accepts the connection request, what is your first message ideally look like in to start a meaningful conversation with the prospect? All right. Very. LinkedIn is a different topic altogether, because the fun part of LinkedIn, so when, like, people these days start comparing LinkedIn with other tools as well, that like in tracker for say, or there are other tools where they are providing information of funding and all. If you see, so LinkedIn is a social network. Hmm. Other tools scrap the data and tell you. So for an example, Zoom Info can go and scrap and data and then tell you that okay, Tom Richard has left X company and joined Y company. Right? Hmm. Zoom Info, Tom Richard himself will not go and tell Zoom Info that okay, I have done this. Hmm. But Tom Richard will go and tell LinkedIn, update his LinkedIn, and will tell himself that I have left this That I company. have judged my profile. So LinkedIn is the only platform where your prospect informs you intentionally, knowingly, that, okay, I have this is the career move, or this is a new breaking news and all that, because there's a social network. That's the social network. Right now, LinkedIn is the most abusive channel on B2B sales. People are saying cold calling is abusive. I would say people are really abusing LinkedIn. Hmm. Really doing it. It's really bad. It's why it is bad. First and foremost, anything that is unwritten can be taken a screenshot and can severely damage your brand's identity, not just yours. Because on LinkedIn, whatever you are doing, you are not just doing for yourself, you are carrying that extra baggage of your brand's identity as well. Hmm. So for an example, on LinkedIn, I am associated with one of the organization. Whatever I'm doing, whatever I'm posting, whatever I'm doing, whatever I'm DM someone, messaging someone, whatever activity I'm doing, Hmm. I am not the, so tomorrow anything goes wrong, I cannot go and say, oh मैंने किया है तो मेरे ब्रांड को मतलब मेरे इमेज को फर्क पड़ रहा है ना, आपको क्या प्रॉब्लम है? आई कैन नॉट गो एंड से दैट, बिकॉज anything that is happening on LinkedIn is not only associated with you, your brand gets affected to that. So Hmm. this is where we need to be extra cautious. That is my first suggestion. दूसरा, यूज लिंक्डइन एज अ सोशल, अगर वो सोशल नेटवर्किंग टूल है तो यूज इट एज सोशल नेटवर्किंग टूल. Hmm. सिंपल. What do I mean by that is, अभी क्या हो रहा है, पीपल आर अब्यूसिंग लिंक्डइन एज लाइक दे स्क्रैप द डेटा, दे फाइंड द डेटा, एंड देन सबको कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज दिया, दिन में 100 कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज दिया, फिर सबको कॉपी पेस्ट करके सेम मैसेज भेज दिया. राइट, दिस इज व्हाट वी हैव बीन डूइंग. LinkedIn is the purpose of LinkedIn is actually not that. So what I mean by that is, see it like, so मैं वैसा will talk sometime later that for me sales is more like a dating thing.
सेल्स इज डेटिंग, मैं हमेशा से बोलता हूँ, आई हैव अ डिफरेंट थॉट अराउंड इट, सेल्स इज मोर लाइक डेटिंग। सो आप ऐसा तो नहीं करते हो ना कि इंस्टाग्राम पे जाके सारी लड़कियों को रिक्वेस्ट भेज दिया या सबको मैसेज भेज दिया या लड़कियां सब लड़कियों, ऐसा नहीं करते ना। वी हम हमें जिससे बात करनी है, वी ऐड देम, वी फॉलो ईच अदर, देन वी टॉक देयर, राइट? LinkedIn is exactly like that. It has to be used as a social network, not an platform to abuse, or not a platform to scam or spam that, to a prospect. So what we can do here is, first and foremost, that think about it, plan it, that who is the right person, and try to reach out to the different channels, of course, and then you reach out politely to that person on LinkedIn. Hmm. Now, what do I mean by politely? You can send a connection request. Now, people come and say कि यार connection request में वो एक option आता है, you add message. So people say कि यार should I add something there or just send a connection request without note. Hmm. Now, this is where go and check online की दुनिया. All the sales leader will say, please add a note there. I personally say never add a note there. Hmm. Why? Maybe I'm wrong, I don't know, but maybe a lot of salespeople can connect with me here. That the moment you add a note, the chances of getting your connection request accepted gets very lower. Try it; it's a proven thing. Just send 20 connection requests without adding a note. Out of 20 possible, 8 people will accept your request. Versus send 20 connection requests with a note, you will see only 3 to 4 people will accept your invitation. So this is how it is. It is unfortunate, fortunate, I don't know, but it is how it is. Although LinkedIn has added that feature as to bring more personalization and all that thing, but unfortunately that doesn't work. I mean, like in general in our lives, it doesn't work. So my Hmm. suggestion: do it how you want to do. You want to send add note, do it. If you don't want to add note, which is fine, but then start building your connection. Hmm. Let the person add you, and of course it is entirely his choice also whether he wants to accept your invitation or not, right? So respect that. And then when you have added that person, the next thing people do is bombard with sales pitches, Hmm. right? That is also wrong, right? Right. So respect that. Give him a hint. There is no harm in giving him a hint Hmm. that, okay, see, nice to connect with you. माई पर्पस तो उसको भी पता है कि अगर आपका प्रोफाइल में सेल्स का है तो उसको भी पता है कि वो सेल्स वाला मेरे को सेल्स ही बेचेगा ना. इट्स अ वेरी सिंपल, इट्स अ कॉमन सेंस, राइट? इफ आई एम एडिंग अ सेल्स समवन सेल्स पर्सन टू माय लिंक्डइन, हे पर्सन जिस उसका काम है सेल्स करना, उसकी तो नीयत है सेल्स में, है ना, Especially सेल्स the करना, one yes is there. वो सेल्स ही करेगा, राइट? सो नथिंग रॉन्ग इन इट, बट देन यू हैव टू बी रिस्पेक्टफुल, यू हैव टू रिस्पेक्ट दैट पर्सन. कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजा, उसको हम्बली बोलो कि सी आई हैव बीन ट्राइंग टू रीच आउट थ्रू डिफरेंट मींस, Hmm. could not establish connect, that's why I'm reaching out to you here. So did you really see my emails or not? वैसा मतलब build that communication, use LinkedIn as a channel to communicate, not कि वही जो मैसेज मैंने उसको ईमेल पे किया था कि हाय दिस आई एम फ्रॉम दिस कंपनी ब्ला ब्ला ब्ला, वी डू दिस कैन वी कनेक्ट, उठाया लिंक्डइन में डाला भेज दिया. हाउ डज दैट सॉल्व अ प्रॉब्लम, राइट? सो इवन वो पर्पस भी सॉल्व नहीं होता वहां पे. तो Hmm. आई वुड से लिंक्डइन इज अ ग्रेट टूल, and we should use it very respectfully while respecting others privacy. I have seen many examples. आप गूगल पे, आप लिंक्डइन पे ओपन करो, आप देखोगे people are harassing each other on LinkedIn. Nobody is responding. I have seen cases like, someone sent 10 emails to a prospect, he did not respond, he reached out on LinkedIn, the person accepted his invitation, he reached out, I sent you a couple of email, why did not you reply me? I was like, obligation थोड़ी ना है. मैंने गुनाह कर दिया गया. हाँ हाँ, मैंने ऑब्लिगेशन थोड़ी ना कि तेरे को जवाब देना ऑब्लिगेशन था, तो दिस इज रॉन्ग. तो वी शुड बी रिस्पेक्टफुल एंड वी हैव टू एक्सेप्ट दिस फैक्ट कि सबको हमारे सोल्यूशन की नीड अभी नहीं है. हम्म. इस अब सच्चाई को स्वीकारने में, हो सकती है, अभी इस नहीं है लेकिन हो सकती है. हो सकती कि तो हो सकती कि दुनिया में तो हम जिंदा हैं, सेल्स नब्बे वाले, दिन है ना. हाँ. बट हमें इस बात को एक्सेप्ट करने की जरूरत है कि भाई अगर कोई मना कर रहा है इसका मतलब उसको जेन्युइनली नीड नहीं है, ठीक है, इट्स ओके. किसी और को, ये बहुत बड़ी दुनिया है, किसी और को ढूंढते हैं. And as you already mentioned, कि when you are like getting the reply with the no now, that is also open lots of the chances to open up for the discussion, like go on with the discussion. Even if someone is replying with your no now, like
at least he is the guy who is interested in listening you, means your first message is not like in any chance disturbing him or making awkward to him. Okay, what I say. So when you get the no, like if someone is on even on the LinkedIn replies with like, hey, I don't need it right now. So in that case, we do not have to leave him right now. Like what I say normally in that case, I just simply say, first of all, whenever someone is accepted my connection request, I never come back to him with my sales kind of the messages. What I say normally, thank you for staying in touch with me. We will connect in near future. That's all. And I leave him for the next 1 or 2 weeks. And then I come back to him. And in meanwhile, I am checking his profile on the regular basis, what he's posting, what his company is actually posting on their business page, and accordingly I'm figuring out some data from there, and then I'm making a particular, you can say, a personalized kind of the message key, where I can start open the conversation. Like for an example, if a company just launched a new product, maybe the company went on a vacation with a team, so I picked out something from there, the humor kind of the things maybe, and then I start with my message with that humor. Oh, I see you that you have visited me, Jaipur in like in the last week, and I see that your team is very enjoying over there. So, like, I can connect with any of the fact that is related to the Jaipur, and then I message him and send him with the question. Definitely, if he really visited with the team, definitely he has to something to share with us. So, what you are asking to him about the Bedo or something like that, just I'm taking an example. So he will reply and come back to, yeah, Tarun, you can also have to visit Jaipur anytime in the future. So something like that, and that's open up our discussion with the prospect actually. So it is going to help like that. तो बस सेल्स में ना एक रूल है तरुण की, सेल्स में ना कोई रूल अप्लाई नहीं होता। रूल अप्लाई नहीं होता डेफिनेटली। एज अ सिंपल रूल ऑफ सेल्स, क्या, क्योंकि सेल्स इज मोर लाइक ह्यूमन टू ह्यूमन कनेक्शन। ह्यूमन टू ह्यूमन कनेक्शन, That's या। it. Nobody, and this is a very brutal fact. Nobody purchases from any company. Nobody purchases from brand. People purchase from human. ह्यूमन। And I can tell you live example of it. People say that people love brand. Of course, brand loyalty is there, right? एक मिनट सर्विस को साइड में कर देते हैं. People talk about iPhone. iPhone is the most lovable brand across world. You go to iPhone store, Apple store, and talk to that person, and you go there with an intent to buy iPhone, but the person doesn't entertain you well. I can guarantee you will, at least you will postpone your decision, or that time particular for that store. you may buy that same phone from, because if you're brand loyal, you will buy that same phone from online, but you will not buy from that person, Buy from that particular person or particular store. Yeah, that's very true. Even right? what happen, even if you go in a local store and the people, like I just take an example of yesterday. I was somewhere out yesterday and we went for a dinner. So the guy who just recently opened a restaurant, he's a Sardarji basically, and he just recently opened a store. I see that particular owner come to me and ask, we do not have the chair at that time, all seats are occupied. So he come to me and he offered me two different chairs. I don't know from where he arranged it. And then he come to me and asked me to sit over there, and he offered me the water by himself, not any waiter, nothing. He come back to me with a water bottle and offer me, sir, please wait for some time and I am sending a manager to you. So this kind of the personalization, like it gives me a really a valued customer for him, कि यार उसने मेरे को एक ऑनर होके वो खुद उठ के आया चेयर पे से, उसने देखा मैं काफी टाइम से खड़ा हूँ या 2-3 मिनट हो चुके हैं मुझे, उसने मुझे चेयर ऑफर की, देन ही कम बैक टू मी एंड विद अ वाटर बॉटल एंड ऑफर्ड मी अ वाटर, कि चलो अभी आप ये लीजिए और मैं आई एम सेंडिंग द मैनेजर एज सुन एज ही फ्री। सो दिस काइंड ऑफ, अदरवाइज मैं क्या करता, 2 मिनट और खड़े होता और वहां से निकलता किसी दूसरे रेस्टोरेंट पे चला जाता। तो ये जो पर्सनलाइजेशन होता है, ये हर चीज में, इवन इन द डिजिटल वर्ल्ड, इट्स आल्सो वर्क्स वेरी वेल। द पर्सनलाइजेशन डेफिनेटली वर्क्स वेरी वेल। Do that, absolutely. The same thing you're doing online, that's it. How you Hmm. make someone feel, that defines a lot of things. Okay, so the I believe that we are almost reaching the time, but Yes, I yes, would yes. love to ask you 1 or 2 more questions if you have the time, Kumares, if you don't mind. We can do it for like next couple of minutes for sure. Okay. Okay, if I ask you, as you mentioned already, that calls, emails, and LinkedIn, these three that we all are doing. If I ask you which one is your favorite one,
in terms of methodology, then which one Okay. is Okay. Simple answer, one word answer, call. call? Calling is my favorite. Hmm. It was never my favorite. Hmm. Now, this is where my messaging for new sales folks, Hmm. this is where in sales, Hmm. retrospecting is very important. Hmm. Very important. It's very crucial for your personal growth. Hmm. What is working for me, what is not. Hmm. If you ask, go and ask randomly any salesperson, which is Hmm. your favorite, call him on LinkedIn. Hmm. I can guarantee you more than 50% will choose email or LinkedIn, LinkedIn. Yeah. right? 10 or 20% may choose call. Now, it is what I suggest. We all use CRM, right? Everyone use CRM. Hmm. Please keep a track of, so like whenever you communicate with someone, when you establish a connection with one of your prospects, you definitely change the status of that lead and something, right? Something do it, right? I mean, everyone does it, right? आप उसको चेंज करते हो कि भाई ये मेरा अंडर फॉलो अप है, ये मेरा हॉट है, वगैरह वगैरह। आप कुछ तो कहीं ना कहीं ट्रैक रखते ही होंगे ना, ये नॉट क्वालिफाइड है, इसने मना कर दिया, नॉट इंटरेस्टेड है, वगैरह वगैरह, Hmm. जो भी है। उसके अंदर एक और फील्ड ऐड कर लो कि Hmm. आपने इससे किस चैनल से कम्युनिकेट किया था, For एंड the आई converted मैजिक lead. ऑफ इट। हम्म। You mean for the converted leads in the CRM? हाँ, मैं सिंपल, नॉट इवन कन्वर्टेड, लाइक द टच्ड वन, जहां Okay. पे आपकी उससे बात हुई, ठीक है। राइट? सिंपल कि आपके पास 1000 लीड है, अब हम्म। 1000 से आपकी बात तो ही नहीं हुई। यू आर डूइंग योर जॉब, यू आर रीचिंग आउट टू देम, बट नो बट इज रिस्पॉन्डिंग यू। अब ओनली अ फ्यू पीपल रिस्पॉन्ड टू अस, राइट? जिसने भी आपको रिस्पॉन्ड किया है ना, हम्म। आप चेंज करोगे स्टेटस उसका सेल्स फोर्स में, राइट? टच करोगे उसको, टच में फिर आप लिखोगे जो भी था, क्या हम्म। हुआ, क्या बात हुई, वगैरह वगैरह। प्लीज ऐड वन मोर फील्ड एंड ट्रैक इट, किस चैनल से आपकी इससे बात हुई। कम्युनिकेशन स्टार्ट हुआ लॉट मेरा। ऑफ कंपनीज मिस दैट राइट नाउ। हम्म। प्लीज डू इट। वाई? आफ्टर अ सर्टेन टाइम, आफ्टर 3 months, आफ्टर 6 months, पुल आउट अ रिपोर्ट एंड सी कि पिछले 6 महीने में आपके पास जो 1000 का डेटाबेस था, उसमें से कितने लोगों से बात हुई, इररिस्पेक्टिव, पॉजिटिव नेगेटिव बात नहीं कर रहा मैं, मेरी ठीक है। बात किससे, टच्ड कौन है, कनेक्शन स्टैब्लिश किस बात? कनेक्शन एस्टेब्लिश किससे हुआ। भले उसने फोन उठा के हंगअप कर दिया, है ना, नो 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 थैंक्स बोल के हंगअप कर दिया, बट कनेक्शन तो एस्टेब्लिश हुआ ना। सो जितनी मेरी टच्ड लीड है, उसमें से मेरी 1000 में से कितने लोगों को टच हुआ, राइट? उसमें देन यू फाइंड आउट कि किस चैनल से कितना हुआ, हम्म। रिकॉल से कितना हुआ, कितना लिंक्डइन से हुआ, कितना ईमेल से हुआ। दिस इज अ वेरी 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 क्रूशियल पैरामीटर टू ट्रैक योर परफॉर्मेंस। वो कैसे हेल्प करता है आपको कि वंस यू डू दिस, हम्म। you will get yourself a shocking revelation. You will see कि यार मेरे को पसंद है ईमेल, हम्म। मैं डेली 2-2 घंटे बैठ के पर्सनलाइज ईमेल लिख रहा हूँ, हम्म। और मेरी जो ये 50 कनेक्ट दिखा रहा है, इस 50 कनेक्ट में तो 30 लोग से तो मेरे कॉल पे बात हुई है। अच्छा। तो नाउ शुड आई इन्वेस्ट मोर टाइम टाइम ऑन द गो। ऑन रिफाइनिंग माई पिच, राइट? दैट कुड बी अदरवाइज एज वेल, लाइक वाइस वर्सा, कि भाई मैं कॉलिंग कॉलिंग कर रहा हूँ, कॉलिंग कॉलिंग कर रहा हूँ, और दिखा रहा है कि मेरी जो कनेक्ट हुआ है वो 30 लोग तो मैं ईमेल से कनेक्ट हुए हैं। तो why I am wasting time on that? Instead, I should focus more time on writing more personalized email. I should, build my skill. So I remember once upon a time when someone asked me which is your favorite channel, the same question, I said email. During the course of time, so that one of my managers, he told me कि तू ना ये track करना शुरू कर, and then you will realize which one is योर your स्टैंड। powerful channel, which one is working for you. It is not you are choosing that channel is choosing you. Click on that and then you will see the magic. And then I did that, and I was like, acha, ये जादू है. So this is where I realized कि cold call works for me. So my first simple answer is cold call, but then, and why cold call? There's a valid reason, because सिंपल पता चल जाता है हानों का, मुंह पे ही सामने, इट्स तो मैं दिस कह सकता हूँ कि तुम्हारे इसका स्ट्रेंथ जो है वो कॉल्स है। एनी टाइम, यस। ये मेरा थोड़ा पर्सनल क्वेश्चन भी है कुमार, कि जब हम कॉल्स करते हैं तो नाउ नाउ इन दिस डेज स्पेशली आफ्टर 2016 आई मस्ट से कि कॉल्स इज गोइंग टू बी लाइक, कि कॉल देखते ही लोग कहते हैं दिस इज गोइंग टू बी अ स्पैम कॉल इफ इट इज फ्रॉम द अननोन नंबर। इवन इवन नाउ वी आर आल्सो नॉट पिकिंग अप द अननोन कॉल्स until and unless we are absolutely free and sitting on the chair only. So when you are making the calls, definitely you are getting a lots of the hung up on the face. Yeah.
है ना, like you start. So even if someone picks up the call, and if you're going to open like that, hey, I am Kumaresh and I'm calling you from this, and I just want to talk to you regarding my services or something like that, definitely you are getting hung up by that particular person, right? So I just want to ask you, like I need your suggestion onto it, like what is going to be your first line when someone picked up your call, the very first line that at least stay that particular person for 2 minutes to listen you. At least I am saying 2 minutes, and just for 30 or 40 seconds maximum. ओके। देखो दो चीज़ इसमें, सो इट्स अ लॉन्ग क्वेश्चन। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, वी हैव टू एक्सेप्ट द रिजेक्शंस, द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, राइट? Yes. ऐसा नहीं है कि कोल्ड कॉल में रिजेक्शंस होते हैं। ईमेल पे आप सबको ईमेल कर रहे हो, ईमेल जा ही नहीं रहा इनबॉक्स में, वो जा रहा हाँ। है स्पैम फोल्डर में, तो उसका तो आपको ट्रैक भी नहीं है। उसका कोल्ड तो कॉल में एटलीस्ट फोन पिक होके गाली खा के फोन रख तो दिया। ईमेल का तो ईमेल का तो पता ही नहीं है, हाँ। वो तो स्पैम में जा रहा है। हम कहीं हम तो भेज रहे हैं, हम खुश हैं कि जी हम तो काम कर रहे हैं, ईमेल हाँ। उसके स्पैम में जा रहा है, कहीं पढ़ ही नहीं रहा हूँ मेरी ईमेल। हम्म। लिंक्डइन पे ज्यादा कुछ कर नहीं सकते क्योंकि स्क्रीनशॉट लेके डाल देगा और बदनामी हो जाएगी कंपनी की, वहां अभी जाकर। बात हो जाएगी कि ये बंदा ठीक मुझे है। हरास और कर रहा अगर आप इसके बियॉन्ड भी लाइफ देखो ना, तो यार आप सोचो, आप रोड पे भी जब जाते हैं लोग पैम्पलेट लेके खड़े होते हैं, दिस इज ऑल्सो सेलिंग, राइट? दे आर है। ऑल्सो डूइंग सेलिंग। हम कितने लोग पैम्पलेट पढ़ते हैं? नहीं हम्म। पढ़ते। रिजेक्शन तो वहां पर भी है, तो हाँ। रिजेक्शन से नहीं भाग सकते। तो हम्म। कोल्ड कॉल इज वन ऑफ द चैनल्स दैट वर्क्स, बट दैट डज नॉट मीन कि वो रिजेक्शन नहीं आएगा, रिजेक्शन तो आएगा। आएगा ही आएगा नाउ आएगा। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, कि मैं उसको ऐसा क्या बोलूं कि वो मेरी बात सुन ले। नाउ हाँ। यस। देयर कुड बी वेरियस देयर कुड बी वेरियस आंसर फॉर इट, एंड देयर इज नो सर्टेन वन वर्ड आंसर, क्योंकि अगर कोई वन वर्ड पिच होती तो हम दुनिया सब मार्केट फॉलो पिच कर को यूज लेते कर रहा था, प्रॉब्लम सॉल्व हो हैं। जाती, राइट? तो इसका कोई ऐसा वन वर्ड पिच तो नहीं है। I am just interested in that particular formula from you. हाँ, तो मेरा मेरा थॉट ये रहता है इसमें कि देखो, होता क्या है ना, और मैं इसको ना बहुत मैं मेरा तो प्रोसेस ना चीज़ों को समझने का थोड़ा वैसा कि आई आई ऑलवेज इमेजिन थिंग्स, और हम्म। आई ऑलवेज टेक एग्जांपल्स ऑफ पर्सनल लाइफ। Okay. पर्सनल लाइफ एज इन, आपके दोस्त ने आपको फोन किया, आपको बहुत जिगरी दोस्त है, राइट? हम्म। जिससे डेली बात होती है, कुछ भी होता है, आपको फोन किया, हम्म। you are busy in between of something, you are doing your work, or say like, we are doing podcast and you suddenly get a call right now, and one of your friends calling whom you cannot miss, like you will put me on hold, ke wait, I'll just pick this call, right? हम्म। आपने उठाया, and then the person will say, हाय भाई कैसा है, लाइक like, बढ़िया हूँ भाई, बता तू बता, और बता कैसा चल रहा है। आई कैन गारंटी यू, यू विल टेल काम बता, हम्म। राइट? हाँ। आप बिजी हो, आपका दिमाग कहीं ऑक्यूपाइड है, सडनली यू गेट अ कॉल, जस्ट बिकॉज यू कैन नॉट मिस दैट कॉल, यू हैव टू पिक अप। हम्म। आपने पिक किया, आपने बोला, अगला बंदा बोल रहा है, ए कैसा है बता, तो मैं बढ़िया हूँ भाई, बढ़िया, तो बता। हाँ मैं बढ़िया हूँ, और बता कैसा चल रहा है भाई, मैं बिजी हूँ, कहीं बाद में बात करूँ क्या, या भाई काम बता, कुछ अर्जेंट काम है क्या, मैं कहीं बिजी था, राइट? इन जनरल लाइफ वी विल डू इट। then हम्म। why should I expect someone to pick up a call, and he's a stranger, he doesn't know me, I don't know him, and I am expecting that person to entertain me, because I don't know whether that person is genuinely busy or not. So हम्म। usually people say, and then pick up the call and say, hey, hi, how are you, hi John, how are you doing? हम्म। भाई जॉन बिजी है, उसको नहीं है टाइम तेरे से बात करने का, उसको नहीं पता तू कौन है, हाउ इज द वेदर देयर, इट्स अ बुलशिट। दैट पर्सन, द फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू दैट पर्सन माइंड इज कि भाई वाई मी, मेरे को क्यों फोन किया, मुझे ये बता, राइट? हम्म। एंड देन पीपल से कि, और चलो वो कॉन्टेक्स्ट भी छोड़ देते हैं कि चलो हम टू द पॉइंट आ जाते हैं कि जॉन, आई नो दैट एक्स वाई जी कंपनी, जो भी आपकी कंपनी है, यू गाइज गॉट फंडिंग, लाइक हाँ फंडिंग मिल गई भाई, अब तो कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर दैट। देखो सिंपल सी बात है, बी ह्यूमन एंड थिंक एज ए ह्यूमन। उसका पहला क्वेश्चन उसके दिमाग में ये है कि भाई आई डोंट नो यू, तो तूने मुझे क्यों फोन किया है, वाई मी? हम्म। दैट्स इट। ट्राई टू आंसर दैट फर्स्ट, हम्म। एंड देन यू विल सी योर communication, your conversations will get increased automatically. हम्म। It's simple, right? So नाउ अब आप बोलोगे कि यार इसका कोई, तो पीपल से लाइक एलिवेटर पिच, इट्स अ वेरी फेमस टर्म सेल्स में, कि एलिवेटर पिच क्या होना चाहिए, है ना? एलिवेटर पिच का कोई ऐसा डेफिनेशन नहीं है। एलिवेटर पिच का डेफिनेशन क्यों नहीं है? क्योंकि एलिवेटर पिच बदल चुकी है आज के टाइम में। हम्म। पहले 40 सेकंड की होती थी, आज के टाइम में वो 10 से 15 सेकंड रह गई है। लोगों के पास नहीं है टाइम, लोग बिजी हैं, लोग को तुरंत आंसर चाहिए।
हम यूट्यूब के ज़माने से यूट्यूब शॉर्ट्स में आ चुके हैं, इंस्टाग्राम से जाके इंस्टाग्राम रील पे आ चुके हैं, हमें सब कुछ जल्दी चाहिए, क्विकली चाहिए। तो नो नो, वहां पर हम भी तो सब कॉल कुछ पे जल्दी वॉइस चाहिए। मेल पे आ जाएंगे सिर्फ, कि वॉइस पे करेक्ट। ही आपको मैसेज देना होगा जो भी Voicemail is magic. Look, people don't use it. It's a great tool as of now. Still today, voicemail is a great tool to use. We can discuss it some other time. है। But my point is, come to the point. Make that person उसको ना वो शुरू का जो 7-8 सेकंड है ना, make him realize why did you choose to call him. That's it. हम्म। कोई फर्क नहीं पड़ता, आप उसको बोलो कि मैं इस कंपनी से बोल रहा हूँ, उस कंपनी से बोल रहा हूँ, है ना, मेरा नाम तरुण है कि मेरा नाम कुमारेश है, उसको घंटा नहीं मतलब तुम्हारा हम्म। नाम क्या है। उसको सिर्फ एक चीज से मतलब है, भाई तूने मुझे क्यों फोन किया है बता। So come to that point quickly and make that pitch very constructive, हम्म। that intrigue, that convince him कि मुझे इसका सुनना चाहिए। हाँ। दैट्स इट। सो दैट वुड बी। अब मुझसे कोई बोले कि यार चलो यार आप पिच बता दो मेरे को एक, तो देर इज नो स्टैंडर्ड पिच फॉर दैट, बिकॉज दिस इज वेयर पर्सनलाइजेशन इज नीडेड। हम्म। दिस इज वेयर दिस सिग्नल्स इंटेंट की जो बात कर रहे हैं, दिस इज वेयर इट इज नीडेड। दैट आई गो एंड टॉक टू दैट पर्सन, आई सॉ दैट ही गॉट द फंडिंग, so I can simply, he picked up the call and I say like, hey John, see, I know, you got the funding, and I am assuming that you will use this funding in tech expansion. I am from a tech company, and that's the reason I'm calling you. Can we talk? Whatever. Whether Totally agree with you. That's the thing that the people are missing right now. They start with a congratulation. No, they don't require your congratulation. They have their personal space. उसको उसके दोस्त यार कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए हाँ, बैठे हैं, उसके भाई दोस्त तू और कौन वो है? है। यू हैव टू बी वेरी ह्यूमन, तुम सेल्स पर्सन ही बन के बात कर लो। हे हाय जॉन, आई आई हैव सीन ऑन जूम इन्फो और वॉट एवर ऑन द थिंग वेयर यू गॉट दैट बी इन्फो। ऑनेस्ट, कोई Be प्रॉब्लम नहीं honest. We have got this info on the Zoom info that you have your company's got a funding of this thing like $4 million or something like that, and then you can ask, hey, so that's why I'm assuming that you may are expanding your like tools or maybe whatever your service related to that, and that ask him that maybe I'm assuming that you are expanding your services. So in that case, as a technical person, as a technology company, we can help you है। over लेकिन here। उसके बाद आप कुछ भी बोलो। हाँ, तो उसके बाद आप कुछ भी बोल दो, तो वो एग्जैक्टली। कम से कम सुनेगा, बिकॉज यू आर टॉकिंग टू हिम व्हाट यू वांट टू से एंड व्हाट ही एक्चुअली एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू, कि भैया मेरे को नहीं चाहिए फालतू की बातें। जो आपने शुरू में एग्जांपल दिया कि एक दोस्त फोन करेगा और पूछेगा, तो अगर इफ यू आर इन समथिंग बिटवीन, देन डेफिनेटली यू आर चलना बताना बाद में बात करियो, नहीं तो यही उनके दिमाग में भी आता है। एंड इफ यू आर ऑन द पॉइंट, then at least he will listen your point and then he say even if you are interested, whether you are going to be interested or not, that totally depends on them, but at least he will listen you। करेक्ट, या तो एब्सोल्युटली। 100 में से ना 50 कॉल तो आपको लिसन कर लेंगे। एग्जैक्टली। दूसरी चीज क्या है, लोग कई बार पूछते हैं, लिटरली पीपल आस्क, इज इट अ सेल्स कॉल? हम्म। I'm telling you, 90% of the time these days sales folks said, no, no, it's not a sales call. It's a consulting call. अरे भाई उसको भी पता है सेल्स कॉल है। बी ऑनेस्ट। हाँ, अब उसको भारत से, पर्सनलाइजेशन के साथ ऐड करके आप बोल सकते हो, मैं बताओ। मैं न्यूयॉर्क में अपने ऑफिस में बैठा हूँ और भारत से मुझे कोई नोएडा से फोन करके बोल रहा है कि नहीं सेल्स नहीं, कंसल्टिंग कॉल है। मेरे को तेरी कंसल्टिंग नहीं चाहिए भाई। राइट, सो अच्छा, वी हैव टू बी इसमें एक ऑनेस्ट। और होता है, सॉरी हम लोग बहुत लंबा टाइम ले रहे हैं, बट जस्ट वन मोर थिंग, कि ऐसे में क्या होता है व्हेन यू आर टॉकिंग टू समवन एंड स्पेशली कि जब उनको दिखता है कि इंडिया से कॉल है, और मे बी इवन इवन यू आर कॉलिंग फ्रॉम द यूएस कॉलर आईडी, lots of the company like me also using the Vonage or some other services. So when we are calling to them, they understand that because भैया अपने यहाँ ट्रू कॉलर है तो उनके आईफोन सबसे ज्यादा यूज होता है, एंड इन आईफोन वी दे हैव द फंक्शनलिटी कि इफ दैट इज द वॉइप कॉल दे कम टू नोट कि ये वॉइप कॉल है, इट्स नॉट अ नॉर्मल नंबर। तो उस केस में वो लोग समझ तो जाते हैं कि ये किसी कोई कंपनी वाला कॉल कर रहा है। अब अगर आप वहां पे यही चीज रिपीट करते हो, दे आर वेरी फर्स्ट कि आप वो एक बैड इंप्रेशन उनके ऊपर डालो और दे विल गोइंग टू हंग अप ऑन यू। वेरी सो ट्रू। नाउ यहाँ पे जो अभी आपने सजेशन दिया वो बहुत काम आता है कि वी ट्रू, अगर उसने उठा लिया, और सेकंड वॉइसमेल, वॉइसमेल इज रियली अ मैजिक। मैं तो एक्सपेक्ट करता हूँ कि मेरे कॉल वॉइसमेल में ही गिरे पहली बार, कि मैं उसको समझा पाऊँ अच्छे से आराम से कि भैया मैं तुझसे ये बात करना चाहता हूँ और मैंने तुम्हें यहाँ यहाँ पे टच किया हुआ है, एक बार जाके देख लो। कम से कम वो देखेगा, हमारा पॉइंट ही यही होना चाहिए, वो मुझे देखे पहले कि समझे कि मैं कहना क्या चाहता हूँ, मैं करना क्या चाहता हूँ। और अगर वो समझ जाता है, अगर उसको जरूरत होगी तो वो आएगा। अगेन सेल ओनली कैन बी डन इफ द नेक्स्ट पर्सन नीड्स इट। वो पहले के कहते थे ना, पहले की कहावत है, गंजे को कंघी बेच के आओ। अब वो जमाना नहीं रहा, गंजा बहुत स्मार्ट हो चुका है।
ट्रू ट्रू वेरी उसको ट्रू। पता है कि उसको कंघी नहीं चाहिए, उसकी जरूरत नहीं है, वो नहीं He लेगा। doesn't need it, he doesn't need it, simple. Simple. Thank you so much for your insights, Kumaresh. And definitely, like these are the practical insights. That's why I started this podcast. और इससे मैं डेफिनेटली मैं बिलीव करता हूँ दैट द पीपल द एक्सपायरिंग मीडियम्स एंड एस्टियर्स आर गेटिंग हेल्प आउट ऑफ इट डेफिनेटली। I hope it is helpful to द them. प्रैक्टिकल इंसाइट, अगर आप बात करें, देयर आर लॉट्स ऑफ द पॉडकास्ट सीरीज इवन फ्रॉम द, लाइक आई डोंट वांट टू टेक द ब्रांड नेम्स ओवर हियर इन दिस पॉडकास्ट, बट people go and watch those podcasts. I believe they can relate ki they all are they either selling the courses, either selling the tools, or like their consultancies, that's all, nothing else. और अभी तो एक नया भी चला है, there are lots of the company who are pretending that they are the sales consultancy company, and they are going to sell help you with the sales, especially in the IT segment. But believe me, they are all the scammers. Please don't go with them. Learn, study, make your own strategy, True think like that. a human, and you will crack it definitely. Absolutely. That's my point away. कोई So शॉर्टकट किस चीज का टाइम लगता है? हाँ, टाइम तो लगता ही है यार। थैंक यू सो मच। आई जस्ट नीड अ लास्ट, I can say, advice from you for our audience. I just want to ask, if you had to give just one piece of advice to someone who is just starting their career in the tech sales today, then what would it be from your side? Okay, so see, the first and foremost thing, और इसको मैं वैसे बोलता हूँ, persistence is the key. Hmm. Sales is the only domain where hard work beats talent. I have seen plenty of times. Hmm. So if you are a hard worker and Hmm. you don't have talent, you can still build your career in sales. Hmm. All you need is persistence. You have to do be consistent of what you're doing. Like Hmm. I told you, कॉलम एंड लिंक्डइन यही हमारी दुनिया है। कॉलम एंड लिंक्डइन प्लस रिसर्च, रिसर्च करोगे उस पर आप एक्टिविटी करोगे, यही सच्चाई में यही दुनिया है। अब Hmm. ये दुनिया बहुत बोरिंग है, बहुत मोनोटोनस जॉब है। यू नो, you start with very excitement, but after some time, after spending couple of days, weeks, months and years, you feel like कि अब क्या कर रही है, Hmm. यही करते हैं क्या और कुछ काम नहीं है क्या यहाँ पे, हाँ. right? It is a very boring thing. So don't get carried away with fascinating world. This is the harsh truth. You know, it is built. Hmm. It takes time to, you know, it may take some time to start delivering result, Hmm. but don't lose hope. Keep doing what is being told to do. Hmm. Trust the process. Process can never be failed. Yes, योर definitely. एक्टिविटी, योर टाइमिंग, लक खराब हो सकता है, टाइमिंग खराब हो सकती है, सोल्यूशन खराब हो सकता है, वट एवर इज दैट, प्रोसेस कभी खराब नहीं हो सकता। सो हाँ. ट्रस्ट द प्रोसेस, कीप डूइंग इट, यू विल गेट योर रिजल्ट। You will get your result. And one thing that I want to add over here with my experience, that exactly it's a very boring task, because you come and again you are doing the same thing, building ICP, prospecting, going on LinkedIn, scrolling and scrolling, that's all, making calls and all. Sometimes you feel कि अभी भी यार मैं वही calling वाली job कर रहा हूँ, nothing else like that. But believe me that you are the guy, you are the sales people are the guy who are standing the company. एब्सोल्युटली द फेस ऑफ द कंपनी बेसिकली। Face of the company and the backbone of the company, I must say. लोग कहते हैं कि tech companies में tech is the bond, backbone. But in my opinion, tech comes on the second stage. First, the business, right? If I'm not come getting the business, the tech will sit alone and someday like nothing else they have to do. देखो So इसका ना सिंपल आंसर वही है तरुण, इफ यू डोंट लव योर जॉब यू कैन नॉट डू एनीथिंग। you cannot do सेल्स, it. सेल्स जैसे एक बहुत ना एक वेग कहावत है, जिसको कुछ नहीं आता वो सेल्स करते हैं। हाँ. In fact, this is my tagline on Instagram as well. If you go and check my profile, मैंने लिखा हुआ है वहाँ पे, जिसको कुछ नहीं आता सेल्स करते हैं, which is humorous लिखा हुआ है ऐसे। This is not true because it needs certain skill set, it needs certain passion to Passion. do what we are doing. हम्म. And sales, अगर आपको सेल्स नहीं आता, हर कुछ आप आउटसोर्स कर सकते हो, सेल्स आउटसोर्स नहीं कर सकते आप। सोर्स नहीं कर सकते, और करोगे like, see, you can do the outsource, but again you have to have your in-house team as well. भाई Without that you can. आउटसोर्स एज इन लाइक, यू नो, हाँ, उसके as a चैनल। stakeholder, as a stakeholder, you can have some cold callers outsource, you can have some emailers outsource, whatever it is like, but सेल्स का आइडिया प्रोसेस आपको कर देना सकते होगा, हो। सेल्स प्रोसेस आपको आपको, देखना होगा कि प्रोसेस मेरा बिल्ड आपको कस्टमर कौन करना है, कितना पैसा आया, कितना गया, क्या हुआ।
तो बाकी सब कुछ आउटसोर्स किया जा सकता है, सेल्स को आप आउटसोर्स नहीं कर सकते, उसको तो आपको चाहिए, खुद को करना, उसको आपको खुद लगना पड़ेगा। तो इट्स अ Right. वेरी रिस्पेक्टेबल जॉब, इट इज़ वेरी रिस्पेक्टफुल प्रोफेशन। आई रियली लव, यू नो, The English. people who are doing passionately. That's it. It और all मैं requires the passion. एक चीज और ऐड करूंगा कुमार, इसकी वेन एवर इवन इवन इन दिस टाइम लाइक आफ्टर 8 or 10 years, or of course you can also relate to me after 15 years, when you are getting the sales that is done, like अब पेमेंट आ गई, अब हो गया काम, तो still you will see that you are the happiest person like on your early days, just same, कि वही एक्साइटमेंट रहती है आफ्टर क्रैकिंग द each deal. रीजन बिहाइंड दैट बिकॉज वी लव आवर जॉब्स। Absolutely. तो हमारी एक्साइटमेंट वहां पे काम नहीं होती, और एंड एंड दैट्स दैट्स द टारगेट ऑफ योर्स, कि सभी को अपना वही टारगेट सेट रखना चाहिए कि यस दिस इज माय मंथली टारगेट और दिस इज माय ईयरली टारगेट। लोग कहते हैं यार मैं आई कांट फॉलो द टारगेट, ओके, बट लिसन, if you do not have the target, you are nowhere is going to achieve even your base target that is expected by the company even the True, big। Jarvis. तो Very true. एक टारगेट तो आपको खुद से डिफाइन कर लो, अगर कंपनी नहीं दे रही, खुद, मैं तो कहता हूँ खुद से डिफाइन कर लो अपना टारगेट, बोर्ड पे चिपका लो कि ये मेरा इस महीने का टारगेट है, मेरे को लाना ही लाना है, कैसे भी लाना है। और ये जब आप लेके चलोगे, यू विल सी दैट यू आर अप्रोचिंग दोज, इट्स आल्सो अ काइंड ऑफ द, Without target, nothing works. You if you have to have a have the target. target, you will definitely going to achieve. Just follow your process, follow your, manage your time, especially like आपका वीक के जितने डेज है वो एक शेड्यूल्ड होने चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं दिन में बीच में कभी भी प्रोस्पेक्टिंग कर रहा हूँ फिर कभी अचानक कॉल स्टार्ट कर, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। यू हैव टू डिफाइन योर टाइम्स, यू हैव टू, Do that. या यू हैव टू ब्रेक इन द बंचेस कि मैं इतने घंटे ये इस पे डिफाइन करता हूँ ये, एंड दैट्स ऑल, दैट्स द हाउ इज वर्क। सो अगेन वन मोर thing from my side. I believe that we are not so much late. Just last thing, I believe just before asking that question, I just want to know that do you like reading books? I love, but I mean, honestly, I'll tell you, Hmm. 5 years back, I did not. Hmm. I'm not an avid reader at all. But then, in fact, I got rejected in one interview because the interviewer just asked me, "Do you read books?" I clearly said no, and I got rejected. So it was a it was an MNC. But yeah, I mean, I'm not. I was not, but nowadays I'm loving it. I started doing it, and I'm really loving it these days. So yes, I mean, I haven't been there yet, like where sales But leaders, usually exciting. people say like, sales leaders spend like, a couple of certain hours every day on reading. I am not here there. I'm not there yet, but then just trying to be. But it's a very good habit to build. Well, okay. Any book that you would like to suggest to our audience that you recently read, or maybe you are thinking about to read? There are, of course, there are many, but then one it's an old book. It's almost I read it first time in 2011, I guess. Yeah, 11 or 12. Predictable Revenue. Predictable Revenue. Okay. It's a very decent book. And Mhm. why I'll tell you, and this is a very good book for business owners and for sales folks as well. Okay. Because predictable revenue, basically, it clearly says, it defines that what is the difference between SDR and ISR. Mhm. यूजुअली कंपनीज में क्या होता है कि, और स्टार्टअप्स में क्या होता है कि सेल्स का बंदा मतलब होता है कि आपने एक बंदा हायर किया, सेल्स Mhm. करेगा, और सेल्स में सब कुछ आ गया, लीड जन भी आ गया, Mhm. सेल्स भी आ गया, सब कुछ आ गया। प्रेडिक्टेबल रेवेन्यू इज अ वेरी फैंसी बुक, इट्स अ वेरी वेरी एरन रॉस, आई गेस, That was, yeah. I don't know. yeah, Aaron Ross is the writer. He was in the Salesforce. So yeah, I mean, very good book, must read for me. It will give you a context of how to, build this sales ka ecosystem in your organization. Got it. So the audience, please go ahead and to see out of these books, and please have a read if you want to be a SDR or the successful, I must say now the successful SDR, SDM. Please go ahead and read that book suggested by the Kumaris. So Kumaris, thank you so much for coming and joining us on this podcast. And your insights are really very like practical, and that's going to be really helpful for the aspiring SDRs and BDRs, obviously. एंड इवन नॉट द ओनली द एसडीएस एंड बीडीएस, आई मस्ट से कि जो प्रैक्टिकल इंसाइट्स आज आपने शेयर किए, ये सबको ही रिलेट कर पाएंगे, इवन द एक्सपीरियंस पीपल्स आल्सो, कि
where they are lacking, because there are some insight that you just shared with us, like for an example, about the call and about the LinkedIn first message or the LinkedIn connection request कि सबको भेजते हैं, and when you are standing with a, personalized note, it's get, even the chances are reduced to by accepted by the prospects. And the reason behind that, क्योंकि ये सिंपल सा टर्म है इन द मार्केट की, पर्सनलाइज नोट लगा के भेजो यू विल गेट एक्सेप्टेड, बट ऐसा होता नहीं है, क्योंकि अब लोग Correct. समझ चुके हैं कि अगर पर्सनलाइज नोट है, अगर उसने देख लिया ऊपर एक दो लाइन लिखी है, हे हाय एंड ऑल, definitely it's a message from the sales team, so they are getting even क्या हो, I will not touch that topic right now because it will again take a long time. So Yes. let's wrap up this session over here. And thank you so much, Kumaris. And I would love to see you again on any of my near future fit podcast. Love Or to. Love the conversation. Definitely. Thanks, Arun, for have a bringing me. nice day. Bye Have a good bye. day. Take care. Bye bye.